when it details into the thorium, second one is thorium. Thorium is also the of the uranium and helium. This helium contains alpha particles, which is useful, and alpha emission, helium nucleus or alpha particles from an unstable Thank you very much. So this is before coming to our title, targeted alpha therapy. We have to know about the basics of the alpha therapy, atomic energy and helium particles or alpha particles. Here you can see the scientist is looking towards the alpha particles here. These are the alpha particles. Physicists observing the alpha particles from the decay of polonium source. Have you heard the polonium source? Polonium radionuclide was discovered by Madame Curie. Madame Curie. He also invented radioactivity. He was playing the element radiation, and when she saw his hand is changing in color and all, react because of the reaction or adverse effects of the radiation, then they found that this is a hazardous material, and in doctor's conference it was presented and given the name of radioactivity. It's a radioactivity, and she received 2 Nobel prizes. One radioactive, second is polonium. These are the alpha particles, microscopic, ultra microscopic diagram. So alpha rays or alpha radiation, it is also this alpha particle called as alpha rays or alpha radiation, consists of 2 protons and 2 neutrons, and they are generally produced in process of alpha decay from the uranium or thorium. This picture or this slide shows, see carefully, metastatic prostate cancer. Prostate is a reproductive organ of male, and this is the prostate cancer with multiple metastases all over the body, which is very painful and disturbing to the patient. And this machine diagnoses this patient image is PET or PET CT. This is PET alone, PET scan. This is PET machine. Here also, after giving this 68 gallium PSMA, exam-based chemotherapy, this disease is almost 98% disappeared from the body. So this is a great achievement. Before it was the challenge. Now this is not challenge. This is very easy to treat, very easy to diagnose and inject radioactive material like alpha therapy or lutetium plasma prostatic antigen, and patient will cure. Not moving. Okay. Again, this is responders. Here you can see, and this is the deceased person. So this is all with the help of PET CT plasma specific membrane antigen.
This is images taken after treatment and before treatment. These are the before treatment and this is after treatment. Here also you can see the disease in all the images. See the burden of the disease here. Nobody can treat except radioactive material. Nobody can treat this. All patient will die. He will leave the family or world. So this is very important to know the science, especially nuclear medicine and radiation science. Thank you very much, sir, for organizing this type of the conference. This is a big crowd, intellectual crowd. They will be benefited with this. Nobody can see this, even doctors cannot see this type of the response and disease diagnosis. So this patient was 74 years old patient with recurrent prostate disease. एक बार उसका इलाज होने से ठीक हो गया. After surgery of prostate gland removal, followed by chemotherapy, फिर immunotherapy, फिर hormone therapy, but again recurrence developed. Patient want to live. He went to our hospital. Then we have done this type of the images and given the lutetium PSME 177. That is beta emitter. Sir, it is beta. We are speaking about the alpha. This is beta. See the burden. How painful. How painful. Each and every cells are diseased. This is MDP bone scan. To diagnose everywhere in the city, this type of the gamma camera is available. Suppose patient complained with this disease and pain in the bone, anywhere in the bone, you can diagnose and send the patient for MDP. Technetium 99 is a hot kit, radionuclide, hot medicine बोलते हैं, because radiation निकलता है, इसलिए साइंस की लैंग्वेज में उसको hot kit बोलते हैं, दवा, medicine, nuclear medicine. This is nuclear medicine. MDP is a pharmaceutical. समझ में आ रहा है? MDP means methyl diphosphonate, like calcium. So it's a combination of pharmacy and nuclear medicine. And alpha therapy, prostate cancer progression for patient with metastatic castration-resistant prostate is lethal. अगर ट्रीटमेंट नहीं हुआ उसकी डेथ हो जाती है, उसको कोई नहीं रोक सकता, कहीं दवाई कुछ भी नहीं है. उसके बाद में आता है अल्फा थेरेपी और एक्टिनियम. एक्टिनियम इज अ रेडियोन्यूक्लिड डीके प्रोडक्ट ऑफ यूरेनियम एंड प्रोस्टेट स्पेसिफिक मेम्ब्रेन एंटीजन इज ए pharmaceutical agent which is tagged with actinium and injected to patient, and patient will be free from the disease. So it has very significant impact in reducing prostate specific antigen levels also in the blood. PSMA is a chemical substance which is liberated from the cancer cells. Cancer cells are the bigger than normal cells and multiply very fast. Looks like a tumor, growth, development, progress. That causes pain or disturbance in the body. PSMA level will be increased and diagnosis with recurrence of the cancer patient, prostate cancer. So these are the causes of death of the patient in cancer.
This is nuclear medicine. I already told you science of medical science which deals with the diagnosis. He is a scientist, Sir William Conrad Röntgen. The journey of radiation started in 1890 when X-ray was discovered. Oh, this slide is, I am showing intentionally because this lecture also delivered in Pharmacy College at Raipur, Chhattisgarh in 2019. And these are the molecular target useful for the alpha somatostatin receptor, lutetium 177 or yttrium. Yttrium 90 is also used for the treatment of primary and secondary tumor of the liver cancer, in which survival is very few days or months. So we are using the yttrium 90 also. So understanding targeted radionuclide therapy for cancer, it is an advanced cancer treatment. Advanced cancer, साधारण कैंसर में जो आज डायग्नोस हुआ है फर्स्ट स्टेज, सेकंड, थर्ड, इसमें इसका यूज नहीं होता अल्फा थेरेपी का. अल्फा थेरेपी ऑलवेज यूज इन एडवांस कैंसर स्टेज 4 or beyond that. Patient who is on deathbed, we can protect. Minimizing damage to healthy tissue also. This is the advantage with the alpha therapy. वो सिर्फ कैंसर को मारेगी और आसपास जो नॉर्मल टिश्यू है उसको कोई हार्म नहीं होता. This is the radioactive particle effect on tumor cells. You can see the tumor cells here, and these are the particles which are destroying the DNA and killing the cells. So the production and availability of the alpha emitters from the nuclear reactor, it is situated in PRC Anushakti Nagar near the ocean, Anushakti Nagar, Apna, and these are two reactors of India which present in Bombay. For instance, radium-223 is generated via a decay product of thorium, and thorium is a decay product of, बताया था पहले, uranium. This is the Mendeleev table. All the elements or radionuclides are present here, which is present in our Earth. And this is the mechanism of action. These are the antigen-specific carrier molecule which pharmacist will make all these things. This one, this portion, and this is our portion, nuclear medicine portion, and make it radio-labeled carrier molecule. Very simple to understand. Clearly, no doubt. One is agent, medicinal agent. Second was in alpha emitter and injected to the patient, and this is the tumor, irradiating the tumor whole and killing the cells and controlling the disease. This is the main aim of our speech. See, the beautiful slide with cancer metastasis in the bone. All the bones are, all 206 bones with the cancer disease. And after giving this alpha treatment, patient is completely cured. This is basic bullet. I am enjoying this. Sorry. Again, looking. Patient is alive and healthy since last 3-4 years. वाला डॉक्टर ने वो इजाज था वो इलाज like breast cancer, those who are treated in 1988 in Indore, they are alive and healthy.
other most commonly used radium-223, that is Ra223, and actinium. Nowadays actinium, the cost of one treatment is 2 lakhs rupees. 2 lakhs one, and it requires four times injections. Thorium also. Astatine is a 2121 is also used for alpha emitter radionuclide. And characteristic and affecting its production method and effectiveness as a therapeutic agent. That is why I am saying that you are very important. You can go America, England, London, Australia, anywhere. My friends are working there. Many friends are working with this science. Radium is very commonly used nowadays. It became into leads. These are the naturally occurring. The occurrence of radium in nature with a half-life of 1602 years. Half-life, first half-life. Very long half-life. Now comes to not this nuclear medicine and TAT. Therapy is challenges and future perspectives. The main source of alpha is thorium extracted from uranium. ये तो याद हो गया होगा. Naturally working, thorium produces alpha particles, helium, and other. And actinium-225 nowadays in market, like Delhi, AIDS, Tata Memorial Hospital or Madras, they are purchasing and using 225 actinium through proton irradiation of radium that is targeted and produced and very commonly used in the India. Alpha particles. These are the machines which diagnose cancer in nuclear medicine. That is PET-CT. Prostate cancer we have covered, and we also explained this castration-resistant prostate cancer, which are not treated by any. So this is the model of treatment of this cancer. This picture shows prostate cancer here, prostate gland. This is urinary bladder. This is prostate gland. These are the stages of prostate cancer. Stage 1, 2, 3, 4. 4 is beyond the organ. These are the diagnostic images. Surgery is the main treatment of prostate cancer. And this is the diagnostic modality PET-CT with the help of gallium 68 PSMA and treatment by targeted therapy. This is also called as radiotheranostics. Radiotheranostics means diagnosis and treatment with the help of radiation theranostics. This is my research. You can see here the tumor burden all over the body, metastatic involvement of the bone with prostate cancer. This case was presented in Hong Kong last month in International Cancer Conference. And after giving this lutetium-177, almost the disease was gone. So the future directions for the radiopharmaceutical. So the future direction, novel radiopharmaceutical and advanced imaging technologies
is exciting, very exciting, with ongoing research discovering new targets and imaging techniques. Both the imaging techniques and new targets are very essential, and the development of novel radiopharmaceuticals coupled with advances in imaging technologies represents a significant role in treatment. Thank you very much. Thank you so much. Thank you so much, sir, for sharing the valuable insights with us. Any question from audience, from students? So, chemotherapy are the drugs like ampicillin, gentamicin, penicillin. Some side effects are there, but you need not to worry for that. Very simple. Nowadays, घर पे भी लगा देते हैं हम लोग जाकर के. ब्लड पिक्चर नॉर्मल होना चाहिए, रीनल प्रोफाइल नॉर्मल होना चाहिए, टॉलरेंस हो पेशेंट को आराम से लगे. And curable. Disease is curable. So, as we know that chemotherapy is having too much drastic side effects inside the patient. How can we say that the radiotherapy is better than the chemotherapy? Very good. Medicine. Good question. Radiotherapy and chemotherapy both are different. Radiotherapy delivers radiation, ionizing radiation to a limited area only. And chemotherapy is for systemic control of the disease in body. Suppose cancer cells are traveling in the blood, lymph fluid, to the brain, thyroid, lung, bone, anywhere can go cancer cells. And metastatic lesion will be the result of this. सेल्स जहां भी जाएगी वो अपनी एक कॉलोनी बनाएगी और एक गांठ बनाएगी और उसका रिजल्ट मैंने आपको इमेज में दिखाया काले काले धब्बे जो है वो सब कैंसर की गांठ है. कैंसर तो रेडिएशन तो उसको ठीक नहीं करेगा. तो टेलीथेरेपी होती है वो लोकलाइज को करेगी और जो अल्फा थेरेपी है जब ये ग्रोथ स्टेज में पहुंचेगा तब पूरे बॉडी में ब्लड में जाएगा तब फिर उसको कंट्रोल करेगा. अल्फा थेरेपी दैट इज टुडेज लेक्चर. अल्फा थेरेपी एंड कीमोथेरेपी पूरे बॉडी में चला गया है लेकिन डेंजरस नहीं है. बोन में ज्यादा नहीं है, लिम्फ नोड पे है, थोड़ा थोड़ा है. वो 6 महीने तक उसको महीने में 2 बार देते हैं कीमोथेरेपी. टोटल 12 साइकिल्स देते हैं और ठीक हो जाता है. सब और क्योरेबल, सब और रेसिडुअल डिसीज है या पार्शियल डिसीज कंट्रोल है. उसके बाद में डॉक्टर फिर उसको दूसरा ट्रीटमेंट देंगे या एक्सटेंड करेंगे ट्रीटमेंट. और अगर कैंसर ज्यादा एग्रेसिव हो गया उससे में है वो वाली बीमारी और फैल गया पूरे में फिर वो अपने पास में अल्फा थेरेपी की किया. सर जो मैलिग्नेंट कैंसर होता है वो पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाता है तो क्या अल्फा थेरेपी या न्यूक्लियर मेडिसिन को ट्रीट कर पाती है? हाँ, कीमोथेरेपी उसमें कीमोथेरेपिस्ट देगा, रेडिएशन थेरेपिस्ट रेडियोथेरेपी देगा, न्यूक्लियर मेडिसिन से हम लोग अल्फा थेरेपी और ल्यूटीशियम थेरेपी ये देते हैं. तो would it be useful कि पेशेंट जो है कीमोथेरेपी नहीं ले केवल आपकी रेडिएशन थेरेपी ले और उसको न्यूक्लियर मेडिसिन की यूज से फायदा मिले? ये जो टीम वर्क है पेशेंट की जैसी कंडीशन रहती है उससे उसका जो कंसल्टेंट है, डॉक्टर्स है, प्रोफेसर्स है, वो डिसाइड करते हैं. टीम वर्क बोर्ड बैठता है क्या इसमें करना चाहिए स्टेप बाय स्टेप, वो डिसीजन लेके फिर वो उसको इलाज करते हैं. तो जो क्वेश्चन आता है कि व्हाई वी आर यूजिंग द न्यूक्लियर मेडिसिन, अगर कीमोथेरेपी इज अवेलेबल तो न्यूक्लियर मेडिसिन यूज किया है तो व्हाट इज द फिजियोलॉजिकल रोल? न्यूक्लियर मेडिसिन इज ए रेडिएशन मेडिसिन and radiation gives some hazards also. For
For that, we need license to handle the radioactive material from Hava Research Institute or AERB, Atomic Energy Regulatory Board, Atomic Energy of India, Mumbai. उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, डिग्री लेना पड़ेगा, एग्जाम में फिर बैठना पड़ेगा रेडिएशन का सेफ्टी वाला एग्जाम में, फिर वो लाइसेंस देंगे कि आप उसके लायक हैं कि ये लंबी लड़ाई होती है और डॉक्टर साहब समझते हैं। तब आपको अगर लाइसेंस मिल गया कि आप रेडिएशन को ह्यूमन में यूज कर सकते हैं, फिर कहीं भी आप उसको गाइडलाइंस के अनुसार उसका इलाज कर सकते हैं पेशेंट। लेकिन दवा मिलेगी आपको बॉम्बे से ही, बाई प्लेन आती है सर, रोज आती है, वीकली आती है, जब ऑर्डर देंगे आपको मंथली भी आती है। ये तो लाइसेंस होल्डर है आपको। कीमोथेरेपी का लिमिटेड रोल है, मैंने बताया आपको। जैसे ऑपरेशन हो गया, ब्रेस्ट कैंसर निकाल के फेंक दिया, अब वो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के पास रेफर करेंगे तो वो 6 महीने का प्लान बनाएंगे कि अब आपको बॉडी में और कहीं पर की बीमारी ना फैले, कीमोथेरेपी लगवाना जरूरी है, दैट इज प्रोफाइलैक्टिक प्रिवेंटिव, फिर उसको कीमोथेरेपी लगाते हैं। अब कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट टू कीमोथेरेपी भी है, लग रही है लेकिन वो कम नहीं हो रहा, एग्रेसिव हो रहा, बड़ा हो रहा है। तब फिर म्यूटेशन वगैरह जैसे है 177, एक्टिनियम है, अल्फा थेरेपी है, ये देते हैं और वो भी नहीं हुई, उसके बाद कोई इलाज नहीं। तो डॉक्टर और पेशेंट और उसकी फैमिली इस कैंसर की बीमारी से लड़ते हैं, डरते नहीं, सब जगह सब इलाज होता है। कुछ लोग डायग्नोसिस के बाद, इलाज के बाद में 30 साल भी जीते हैं। कुछ लोगों को 70 साल की उम्र में हुआ तो 80-90 में होते, लेकिन कैंसर से नहीं मरते, वो हार्ट अटैक से मर जाते हैं, एक्सीडेंट से मर जाते हैं, हिप जॉइंट फ्रैक्चर से मर जाते हैं, हार्ट अटैक से मर जाते हैं, डायबिटीज से मर जाते हैं, ये सारी बीमारियां हैं। लेकिन कैंसर तो अच्छा हो जाता है। वी आर टॉकिंग अबाउट द कैंसर एंड इट्स ट्रीटमेंट, बाकी वो दूसरा इलाज कराओ, इलाज कराओ सर। हाँ, सबका अलग अलग है, सबका अलग है। डायग्नोसिस के लिए, रेडियोन्यूक्लिड डायग्नोसिस के लिए भी जैसे बोर्ड में आ गया है तो मेथिलीन डाइफॉस्फोनेट, ब्रेस्ट कैंसर है, यूट्राइन है, दूसरा और कैंसर है एफडीजी 18 फ्लोरीन का जो करते हैं, साइक्लोट्रोन से प्रोड्यूस होता है। साइक्लोट्रोन भोपाल में लगा हुआ है, वहां से तो सप्लाई होता है सब। उसकी हाफ लाइफ 1 घंटा 10 मिनट है, उसके बाद वो पानी में जाता है। तो कैंसर का नॉलेज बहुत जरूरी है। कैंसर का इलाज किससे होता है? घर में, पड़ोस में, परिवार में, समाज में, कहीं भी इसकी चर्चा होती तो आपको मालूम होना चाहिए। कभी कोई गाइडेंस मांगता तो उसको भी है कि इसमें इलाज ये है, और ये भी बताएंगे नया इलाज, एडवांस थेरेपी, एडवांस ट्रीटमेंट, ये भी है। तो ये बहुत बड़ी चीज सर। गामा रेडिएशन और बीटा रेडिएशन से पेशेंट हाइपोकैल्शियमिया में, गामा रेडिएशन और बीटा रेडिएशन जो प्रोवाइड करते हैं कैंसर पेशेंट को, तो उसमें पेशेंट हाइपोकैल्शियमिया तरफ शिफ्ट हो जाता है। हाइपोकैल्शियमिया इसमें सर टेंडेंसी होती है पेशेंट की हाइपोकैल्शियमिया तरफ जाने की। रेडिएशन से क्या है, ब्लड सेल्स की डैमेज होती है, और जब बॉडी में रेडिएशन रहता है तो ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स होती है जो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म करती है बोन में, वो भी डैमेज होती है। तो कैल्शियम की कमी तो होती है, उसके साथ में हम कैल्शियम का ऑस्टियोकैल्शियम है, कैल्शियम ट्राई करते हैं। समय बर्बाद किए, समय बर्बाद किए हमने, आपके बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा। बोर्ड में क्या होता है, सेल्स होती है